Hello everyone and welcome to the SBI Securities Weekly Wrap podcast. So first, let's discuss how the markets have been in the week gone by. The Indian benchmark indices continued their downward trajectory and closed lower for the fourth consecutive session, with Sensex and Nifty declining by 0.4% and 0.5% week on week respectively. This was due to multiple factors such as weak 1Q FY26 corporate earnings from key corporates, US trade-related uncertainties, rise in India VIX, rupee weakening, continued FI selling, and weak global cues. Broader markets too ended lower, with BSE mid-cap and small-cap falling 1.7% and 2.5% week-on-week respectively. Sectorally, except BankX and healthcare, which were up by 0.5% each, other sectors such as metal, consumer durable, auto, capital goods, PSU, power, oil and gas, FMCG, IT and realty ended in red. On the economic data front, 8 core industries reported growth at 1.7% YOY in June 25, improving from its 9-month low of 0.7% YOY in May 25. The primary market continued to show traction. 4 mainboard IPOs including NSDL will open up for subscription during the next week. The monsoon progress witnessed a marginal dip pan-India with a surplus by 5% of LPA versus 9% surplus till previous week. On the fund flow sides, FIs net sold Rs 9,488 crores while DIs remained net buyers to the tune of Rs 17,933 crores in the cash market during the week. S&P 500 and Nasdaq managed to close at record high on Thursday after Alphabet's 2Q CY25 earnings came in better than expected. Globally, multiple trade deals were announced during the week. US-Japan trade deal was finalized where Japanese goods will face import levies cut from 25% to 15%. In return, US will benefit from a $550 billion investment from Japan, which will make US manufacturing industry competitive. President Donald Trump also announced a 19% tax on imports from the Philippines. India and UK signed a landmark Free Trade Agreement FTA, which was agreed upon earlier in May. The FTA will bring significant benefits to India by opening new avenues of growth, skill development and employment opportunities for Indians across multiple sectors. The agreement has been finalized with an aim to enhance bilateral trade to $120 billion by 2030. Aspects to look out for next week. So next week, the earnings season will gain further momentum with BEL, L&T, NTPC, Asian Paints, Tata Steel, HUL, Sun Pharmaceutical Industries, M&M, Maruti Suzuki, ITC, Adani Power, Tata Power, etc. declaring their 1Q FY26 results. Kotak Mahindra Bank, Lodha Developers and IDFC First Bank will announce their results today. Some of the key economic data released scheduled for next week are India June 25 IIP, India July 25 Manufacturing PMI, US 2Q CY25 annualized GDP growth, US FOMC interest rate decision, US July 25 S&P Global Manufacturing PMI, Japan BOJ interest rate decision, China's June 25 kicks in manufacturing PMI. Progressing ahead, Indian markets are expected to be influenced by economic data and corporate earnings. अब बात करते हैं कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स पे. यहाँ हम स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहाँ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हुई. पहला स्टॉक है तिलक नगर इंडस्ट्रीज़. इस कंपनी ने एक डेफिनेटिव अग्रीमेंट एंटर किया है विद परनॉट रिकॉर्ड प्राइवेट लिमिटेड, जहां वो इंपीरियल ब्लू बिजनेस डिवीजन को अक्वायर करेगा फॉर अ लमसम कंसिडरेशन ऑफ यूरो 413 मिलियन. इंपीरियल ब्लू जो है वो थर्ड लार्जेस्ट विस्की ब्रांड है कंट्री में इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और उसका मार्केट शेयर करीब 9% है वो सेगमेंट में. अगला स्टॉक है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर. इस कंपनी एफकॉन lowest bidder L1 emerge हुई है for rehabilitation and construction of a railway line in Republic of Croatia worth rupees 6,800 crores. अगला स्टॉक है DCW. इस कंपनी ने अपना फर्स्ट फेज ऑफ इस CPVC कैपेसिटी एक्सपेंशन कमीशन किया जो कि अहेड ऑफ शेड्यूल था, जहां उन्होंने 20,000 मेट्रिक टन्स ऐड किया, टेकिंग द टोटल कैपेसिटी टू 40,000 मेट्रिक टन्स. अगला स्टॉक है नैटको फार्मा. नैटको फार्मा ने 35.75% स्टेक अक्वायर किया इन एडकॉक इंग्राम फॉर रुपीज़ 2,000 करोड़ और इस एक्विजिशन
जो है वो एम की गई है एट इनकॉपरेटिंग एन आर्म नेटको फार्मा साउथ अफ्रीका प्रोप्राइटी विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 2100 करोड़। अगला स्टॉक है ईपैक ड्यूरेबल। सो ईपैक ड्यूरेबल ने एक जेवी फॉर्म किया है विद साउथ कोरियाज बुमिन इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां ईपैक ड्यूरेबल 66.67% स्टेक होल्ड करेगी ये जेवी में, जहां वो मैन्युफैक्चर एंड सेल करेगी टीवी स्पीकर्स, साउंड बार्स एंड अदर ऑडियो डिवाइसेस फॉर इंडियन मार्केट विद एन ऑप्शन टू एक्सपैंड। अब चलते हैं ऑर्डर इनफ्लोज की ओर। सो यहाँ हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कंपनियाँ को ऑर्डर्स मिले हैं ये हफ्ते। सो पहला कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, जहाँ L&T को 2500 to 5000 करोड़ के रेंज में ऑर्डर रिसीव हुआ है फ्रॉम आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला स्टॉक है वारी एनर्जीज, जहाँ कंपनी को एक इंटरनेशनल क्लाइंट से 500 मेगावाट्स का ऑर्डर मिला है। अगला स्टॉक है भारत डायनामिक्स, जहाँ आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड ने 809 करोड़ का ऑर्डर भारत डायनामिक्स को दिया है। अगला स्टॉक है BEML, where the company has received an order worth rupees 293.8 crores from Ministry of Defence. Then अगला स्टॉक है टिटागर रेल सिस्टम, जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने 312.7 करोड़ का ऑर्डर प्लेस किया है टिटागर को। अब चलते हैं हमारे प्रोडक्ट्स की ओर, जहाँ पहला SBI सिक्योरिटीज़ का पहला प्रोडक्ट है पिक ऑफ द डे, जहाँ हमने दो कंपनी पे बाई कॉल दिया है। सो पहला कंपनी है बेलराइज इंडस्ट्रीज एट अ CMP ऑफ रुपीज़ 130.8 एंड हैविंग अ टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज़ 150.5, 15% अपसाइड है। और दूसरा स्टॉक है श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी, जहां हमने बाई कॉल दिया है एट अ CMP ऑफ रुपीज़ 953, हैविंग अ टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज़ 1048.3, 10%। अगला प्रोडक्ट है पिक ऑफ द वीक, जहां हमने JSW इंफ्रास्ट्रक्चर पे बाई कॉल दिया है एट अ CMP ऑफ रुपीज़ 324 एंड हैविंग अ टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज़ 372 विद अ अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 15%। So for corporate actions for next week, for key corporate actions in next week, kindly refer to our weekly wrap report. The link to view the report is shared in the description box below. So this was all about the weekly market podcast. Thank you for listening. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.